अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू LA नॉयर गेम प्ले पार्ट नंबर 3। तो लास्ट टाइम हम मिस्टर ब्लैक की वाइफ के घर में उनसे कुछ क्वेश्चंस करने के लिए गए थे और वहीं से आगे एपिसोड को रिज्यूम करते हैं मेरे ख्याल में। तो चलिए शुरू करते हैं। Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Let's check the place out. Come on. तो जो पाइप का पीस हमें मिला था जिसके ऊपर There's got to be something in here to go on. ओके ब्रिकास की, तो जो हमें पाइप का पीस मिला था जिस पे एड्रियन के ब्लड के साइंस थे, इसकी वाइफ के मुताबिक वो इनके घर में कुछ ही दिन पहले उसी कंपनी के मतलब हीटर जो इंस्टॉल किया गया था। और मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ उसके उस पार्ट से जहाँ से पानी निकलता है कि क्या वो अभी भी घर में मौजूद है या नहीं। इसमें मुझे वॉशरूम ढूंढना पड़ेगा, प्रॉब्ली बेडरूम है इनका। मैं भी हैरान हूँ कि इसकी बीवी ने हमसे अभी तक आईडी का नहीं पूछा कि आप वाकई में पुलिस वाले हैं कि नहीं। बड़ी आसानी से इसको लूट के जा सकते हैं यहाँ से। A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. यानी कि कोई जल्दी से इस घर से बाहर निकला है और एक सूटकेस भी लेके, क्योंकि जो क्लॉथ्स हैं वो नीचे पड़े हैं, किसी ने उठा के जहमत भी नहीं की रखने के ऊपर। इनके रूम अलग अलग किए हुए हैं और ये खाली होनी चाहिए। यस ओके, इसकी फोटो, separate bedrooms, separate pictures. What gives here? yes, exactly, मैं भी exactly यही सोच रहा था। To my Adrian. This thing gets more and more interesting. निकोल, इसकी बीवी का नाम देखते हैं। अगर ये इसकी बीवी की तरफ से नहीं है तो मार्गरेट ब्लैक, यानी कि ये इसकी बीवी का नाम नहीं है, किसी और लड़की का नाम है और इसने ये फ़ोटो उसको भेजी है इसी की। और ये दोनों अलग अलग बेडरूम में सोते थे, यानी कि प्रॉब्ली इनके अंदर सेपरेशन होने को आई हुई थी या हुई हुई थी। तो मुझे वो पाइप, एक मिनट, ये किसी बार की लगती है। यस, इसका एड्रेस भी होना है, वहाँ से भी शायद कुछ इन्फो मिल जाए। ओके
हमें घर के बाहर लगे हुए किचन से बाहर जो इन्होंने वाटर हीटर इंस्टॉल करवाया था उसके पाइप में काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहा हूँ। Are you leaving the thing half finished? ओके तो इन्हें कंबाइन करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। सबसे पहले नहीं, यहाँ पे स्ट्रेट वाला लगेगा शायद, येलो ये वाला, लेफ्ट यहाँ पे। ओके ये ट्राई करते हैं। या नहीं नहीं यूँ। That can't be right. No. क्योंकि यहाँ पे आ गया। Are you नहीं just leaving the thing half finished? That looks wrong. ओके ये कनेक्टेड हो गया। आता है। Doesn't go there. No use leaving the thing half finished. That can't be right. मेरे ख्याल में पहला हमने जो येलो लगाया वो गलत लगाया। नहीं हाँ ये यहाँ पे आता है। ओके and this one is here. Yes. तो ये एक So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. तो यही था जो मिसिंग था। ओके तो यही वो पीस था जो मिसिंग था और मुझे यकीन था। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ थी वो ये थी कि इसने एक पिग परचेज़ किया था कल, और वो पिग इसके घर में भी नहीं है। इसकी वाइफ से पूछना पड़ेगा उसके बारे में भी। मेरा जो ख्याल है वो किसी और तरफ जा रहा है, लेकिन मैं भी वो थॉट शेयर नहीं करूँगा क्योंकि किसी को उसके घर की चीज़ों से क्यों मर्डर किया गया। आई मीन दुनिया में हज़ारों चीज़ें जिससे आप किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। मैं एक चीज़ वीडियो में मिस कर गया था कि जब इसने ये मैचेस उठाई थी तो इसने बोला था कि ये घर में कैसे आ सकती हैं। फिर इसने यूँ ओपन किया तो इसने कहा था कि ये इस बार का प्रॉबली मेंबर होगा, तो वो रिकॉर्ड नहीं कर सका था, मैं बीच में स्किप हो गई थी। तो अब फ़ोन करनी है और फ़ोन डिपार्टमेंट को करके मैं भी बार का एड्रेस मालूम करना है। ये तो तक नहीं समझ आ रही है। और फ़ोन होगी कहीं रीडिंग रूम में, नहीं। yes. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. Help, Detective. I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks. तो बार का एड्रेस मिल चुका है अब।
मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कुछ और रह गया चेक करने वाला। हमसे क्वेश्चन करते हैं। अभी भी ये म्यूज़िक बज रहा है और इस म्यूज़िक का मतलब होता है कि कुछ चीज़ रह गई है। ये डोर्स के बैक डोर्स हैं। Doesn't look like anything. Doesn't give me anything to go on. हाल में कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनसे। I'm all right now, detectives. ओके, स्लॉटर हाउस रिसीप्ट नहीं यानी स्टेंजल ग्लासेस के। Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि वो तो रिपेयर हुआ हुआ है। That's a lie, Margaret. You know exactly what Perry was wearing because you were there. You're being flat out ridiculous now. Why don't you show me some proof of where I was supposed to be? If I was there, at least I'd know what happened to him. But I don't, detective. And you might not care, but that is the most terrible feeling. सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया। ओके, यहाँ से कम बैक करना पड़ेगा वरना इसने बयान देना छोड़ देना। ओके, इस बार की मैच बुक के बारे में पूछते हैं इससे। Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. ओके, ये सच है। So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was going to meet Frank for a drink. सच बोल रही है। So nothing out of the usual then. Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7. स्लॉटर आउट की रिसीप्ट थी, एक पिग उन्होंने परचेज किया था, उसके बारे में पूछते हैं। We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. सच बोल रही है। What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character. I told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. ओके, फोटोग्राफ मिला है आपके हस्बैंड का जिसके पीछे एक लड़की का नाम है और काफ़ी चीज़ी बातें लिखी हुई हैं। क्या आप निकोल को जानते हैं? Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. There's झूठ। plenty to tell. You just won't tell it. You're lying about the photograph, Mrs. Black. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that.
I told you what I know about the pictures. तो उसके पीछे जो मैसेज है आप वो What छुपा रही about हैं। Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. A baby for Mrs. Black. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. सच बोल रही हो I think. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. मेरे ख्याल में अब चलना चाहिए बार की तरफ और बार में जाके पता करते हैं कि एड्रियन वहाँ का रेगुलर था या नहीं और कल रात को यहाँ पे आया था या नहीं या किसके साथ आया था। वहाँ से हमें कुछ लीड मिल सकती है। बार ओके। तो इसके बाद में और डिटेक्टिव ब्रिकॉस्की की गाड़ी रवा दवा थी केवन बार की तरफ। वहाँ पे हमने एक आदमी से मिला था फ्रैंक मॉर्गन के नाम से। ये मिस्टर ब्लैक के लिए काम करता है और ये दोनों इकट्ठे ड्रिंक किया करते थे। यहाँ से कि कुछ लीड मिल सकती है तो मेरे ख्याल में ये वो इंसान है जो हमें कुछ बता सकता है। मुझे इस केस में यही लग रहा है कि ये बंदा मर्डर नहीं हुआ और वो जो ब्लड था गाड़ी के अंदर वो पिग है, क्योंकि पिग का नामो निशाना घर में है ना, उसको वाइफ को पता है। तो ये सारा केस एक फाउल प्ले की तरफ जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और 10 दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद आपको ये खुशखबरी मिलेगी। तो ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।